Good afternoon, students. Once again, welcome you all for this video lecture. In this particular video, uh, today we are going to discuss, we'll start the new chapter, that is unit number 4, building services. Okay? So, building services in your syllabus, it is divided into some 5 parts. That is, first one is noise and acoustics, second one is ventilation, third one is lighting, and fourth one is plumbing, and the next and the last one is other services. Okay, so each and every part we will try to cover in a different video. Clear? So today we are going to start with the noise and acoustics. In that particular noise and acoustics, we are going to not in deep, we are going to briefly discuss about the sound insulations, acoustical defects, what is reverberation time, Sabine's formula, sound absorbance, planning for good acoustics. So this is the syllabus. So let's start the syllabus, that is noise and acoustics. See, electric services, lighting, ventilation, air conditioning, water supply, sanitation, rainwater harvesting, vertical circulation units such as lifts, elevator, escalators. See, all these things comes under your building services. Okay? So why you need to provide all these things means it is a basic need of any building, so that it is all about the improve the comfort. Clear? So to make it more comfortable for the human beings, we are going to provide different types of services. So that is called as building services. So let's start with the noise and acoustics. See, in this particular PPT, there are more syllabus is there. Okay, sounds is there. So many different topics are covered in within the sounds, noise and sound effects, acoustics, everything. But while referring this particular PPT, which I'm going to upload in your Google Classroom also, so what you have to do is just try to keep it only for the university syllabus. So that is sound insulation, acoustic defects, reverberation time, sound absorbance, planning for good acoustics. Only these information you need to study. इसमें और भी ज़्यादा information available है, so उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो. ठीक है? Okay. So let's start with some brief introduction to the particular topic, that is noise and acoustics. See, hearing, most important communication है, obviously. So there are so many different communication skills are there. Communication हम करते हैं लोगों के बीच में, या तो उसमें hearing is the most important, because you have to listen, then only you can talk. Eyes can be shut when there is too much light or unwanted scene not to be viewed. So you know, जब चाहिए ज़्यादा लाइट है या नहीं चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए, तो हम आंख बंद कर लेते हैं. But when it comes to the ears, it is obviously it is open throughout the life. Protection, if necessary, will have to be provided in the environment. So that means obviously, whenever if it is required, so you have to provide the protection for these ears. According to, that is, World Health Organization, noise is the most insistent to control that. Clear? So you know the basic definition of a noise. Noise is nothing but unwanted sound. So it may be okay, it may be due to frequency or intensity of the sound, or both. Say, noise may be because of the high frequency or high intensity of sound, or it may be both. Okay? So noise due to high frequency sound is more unpleasant than noise due to low frequency. That means if the sound is having a more high frequency, so it will cause a noise. Okay? And with if even low frequency also, it will cause the noise, but it is not so much going to cause the damage. Next, uncomfortable, fatigue, inefficiency, headaches, or high pressure. That means, see, what is the effect of noise, what problems it is going to cause. Obviously, it is going to cause some uncomfortable for the human beings. It is going to cause fatigue, inefficiency in the work, headaches, high BP, blood pressure, all these things, or etc. So many things will be problem हो सकता है. So next one is even it may cause temporary deafness or nervous breakdown also. ठीक है? So because of the noise, there are different effects are there, so which I listed in this particular PPT. Causing annoyance, so that means
irritation because of the noise. One person may get irritation, especially classroom में आप लोग बात करते रहते हैं तो हम बोलते रहते हैं कि don't make noise because it noise is it will cause irritation. ठीक है. देन इट अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन. सेम एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ. समझो आप क्लास में बात कर रहे, बहुत सारे कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन होता रहता है, हम पढ़ाते रहते हैं, कुछ बच्चे सुनते रहते हैं. So because of some noise effects, it may affect the communication. It may disturb the communication, causing damage to the hearing. वही noise अगर उसका जो decibel जो भी उसका strength अगर ज़्यादा हो गया तो it may cause the damage to the hearing also, and it may leads to fatigue and decrease the efficiency of a person. So obviously if somebody is working because of the noise, आपको आप खुद आप experience किया रहेगा, आप कुछ काम करते रहते हो इस समय because of the heavy noise surrounding में हो रहा है, तो because of that one your work efficiency may reduce. ठीक है. In some time it may cause permanent changes in the normal functioning of the human also. It may cause some permanent damage also for the ear, and it will also affect the mental and physical health, and also it takes away the essence of music and speech. So मतलब जो म्यूज़िक में मज़ा रहता है या स्पीच में जो इंटरेस्ट रहता है, जब अगर ये नॉइस मिक्स हो गया या बिकॉज ऑफ द नॉइस ऑल दिस थिंग्स वॉट एवर दैट जो उसमें म्यूज़िक में जो अच्छा पार्ट था वो सब चला जाता है. यू मे नॉट एन्जॉय द म्यूज़िक और स्पीच, ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो noise can also be classified as airborne noise and structural borne noise. So this is one another important point examination में भी पूछते हैं. See, airborne noise means produced inside of enclosure controlled by putting absorbing material over the wall. See, airborne noise but inside of the enclosure controlled by putting absorbing material. So that produce outside of the enclosure. Okay. See, airborne noise means it may produce within the house or within the enclosure, or it may produce outside also, but only thing is it is transmitting through air. समझ में आया. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एयरबोर्न नॉइस. सी समझो इफ़ द दैट पर्टिकुलर नॉइस इज़ इनसाइड द एनक्लोजर, मतलब हम घर के अंदर अगर हम मीटिंग चल रहा है, बातें कर रहे हैं, उसके वजह से नॉइस हो रहा है, तो अगर इफ़ इट इज़ द लाइक दैट देन इट इज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय पुटिंग अब्जॉर्बिंग मटेरियल ओवर द वॉल. तो आप बहुत सारे कंपनीज में देखा होगा कि देयर इज़ ए साउंड प्रूफ रूम्स रहता है जहाँ पे अंदर मीटिंग चलता रहता है. दैट मीन्स वॉट एवर द साउंड्स नॉइस ऑल दोज थिंग्स हैपन we can't hear outside. This is how you are going to control the noise. And if it is produced outside of the enclosure, that means building से बाहर अगर कुछ आवाज़ आ रहा है तो सो और या रूम टू रूम में डिफरेंस है तो यू कैन पुट द पार्टीशन वॉल्स एंड यू कैन रिड्यूस द दैट नॉइस लेवल्स. ठीक है. This is about the airborne because here the sound or noise is that is traveling through the air. Clear. The next one is the structure borne noise. So that means either what happens, uh, whatever the noise is there, it is traveling through the structure or material. So जैसे कि due to impact noise of machineries or object sliding on the floor, आप चेयर खींचते हो तो साउंड जनरेट होता है, सॉरी नॉइज जनरेट होता है, इट इज़ इरिटेटिंग एंड दैट पर्टिकुलर नॉइज इज ट्रैवलिंग थ्रू द मटेरियल्स, वॉल के थ्रू से ऐसा मटेरियल के अंदर से जाता है. हाउ इट कैन बी reduced by damping materials which is used in the construction activities. ठीक है. नेक्स्ट एक सेकेंड. Factors controlling noise, obviously acceptable noise levels in the working interiors, insulation of the rooms, not required all these things. इसलिए बोला ज़्यादा इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है. ठीक है. ये आइदर यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो और पीपीटी, बट नॉट नीड टू आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स. जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिक्वायर्ड फॉर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम कवरिंग इट. ओके. acceptable indoor noise levels, you can see radio and TV studios 25 to 30 decibels रहना चाहिए. हॉस्पिटल एंड ऑडिटोरियम में 35 to 40 decibels रहना चाहिए. Factories and all it is 55 to 60. That means you can see from 25 decibels to 60 decibels में vary हो रहा है depending upon the these things. See, auditorium, hospitals, radio, TV studios, all these things required very silence. So that's why you can see their noise level is also very less. ठीक है. But if it comes to the larger public areas, offices, factories, obviously here there is a large sound effect will be there.
ठीक है. So that's why it is 45 50 55 60 ऐसे रेंज में डेसिबल्स में नॉइस लेवल्स है. ठीक है. सो सिमिलरली यू कैन सी नॉइस लेवल फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ सोर्सेस. अगर रेसिडेंशियल इट में जनरेट 50 डेसिमल्स का, ऑफिस ट्रैफिक एंड ऑल 60-70 डेसिमल्स जनरेट करता है. ठीक है. यू कैन सी हेवी रोड ट्रैफिक 80 to 90 डेसिमल्स का साउंड क्रिएट करता है, नॉइस क्रिएट करता है. एयर ट्रैफिक 100 to 110, जेट एयरक्राफ्ट 135. सी ऑल दिस थिंग्स आर द सोर्सेस. लाइक आप देख सकते हो घर में बहुत ही कम आवाज़ जनरेट होता है. ठीक है. वही जेट एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम है 135. इवन चेन्स और yes, all these things. If there is one more diagram you can see here. Even decibels धीरे 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 it is keeps on increasing. ठीक है. You can see rock music, chainsaw, jet aircraft. So all these things are 100 plus decibels है noise level. ठीक है. So some more examples. Same तुम images upload किया हूँ. ठीक है. So एक second. So properties of sound, all these things are not required, but one important point is there. So that is you have to remember कि the unit of sound is decibel. ठीक है. Decibel is the unit of sound. That is dB. You can see here I have written here decibel, the last point. ठीक है. So once again all these things are same. See this what about this one is the behavior of sound in enclosure. So that means whenever the sound is within the enclosure, how it behaves is whenever the sound waves are generated. See समझो एक वॉल को वो टच किया तो कुछ अमाउंट ऑफ वेव्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ विल बी अब्जॉर्ब एंड set on the wall, and some part of the waves will be transmitted through the wall itself. So it is divided into three parts. One part is reflected, second part is stayed absorbed by the surface itself, and third one is which uses the wall as a क्या बोल सकते हैं medium, and it will transfer from one point to another point. ठीक है. So all this information I had given. So you can see this is incident waveforms and reflected waveforms. Basically the sound or noise sound waves will reflect. ठीक है. So not required all these things. You can say all this convex, concave, all this information. Why it is required is it is required while designing the buildings, because you should know whether you need to साउंड वेव्स को अगर स्प्रेड करना है तो किस तरह का डिज़ाइन करना है, तो या एक ही जगह पे लेके आना है तो कैसे डिज़ाइन करना है, उसके लिए ये सब आता है. ठीक है. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फिगर. यू कैन सी अगर इफ़ यू प्रोवाइड लाइक दिस, if you provide like this, so you can see all the जो भी जा रहा है, so it will reflect back to a single point, same point पे वापस आता है. ठीक है. the sound will reflected at concave surface. You can see it. वही अगर आपने convex रखा तो it will पहले एरिया इतना था, अभी एरिया मैक्सिमम एरिया कवर होता है. so all these things are important. ठीक है. बाद में see one more diagram. You can see this in this particular diagram. You can see clearly the area it is, you can see it इतना कवर कर रहा है, बट जनरेट हुआ था इधर से सोर्स. सो सेम सोर्स था बट यू कैन से कवर इधर पे. ठीक है. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेसेस का डिफरेंस. ओके. See all these things are already discussed. That is alternate airborne हो गया, this what we'll call structure borne noises. ठीक है. मेन पॉइंट पे जाते हैं, that is sound insulations. So once again in sound insulation, see sound insulation or soundproofing is a measure used to reduce the level of the sound when it passes through the insulating building component. So obviously sound insulation is nothing but the to reduce the whatever the sound it is generating in that particular room by using different materials. ठीक है. The method and materials used for the sound insulation should be such that desirable insulation is obtained. So obviously whatever the materials and method you are going to use for the sound insulation, obviously it should provide should reduce the
क्या बोलते हैं नॉइस को या साउंड को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है. So noise control, how we are going to control the noise, that is purpose. Adopt such measures which allow only the noise of level of safe range to reach the human ear. Obviously, see that means what is the main purpose of this providing the noise control is जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी यूज़र्स है पर्टिकुलर एरिया का या रेसिडेंशियल या ऑफिस जो भी है, तो एक सेफ रेंज ऑफ साउंड उनको मिलना चाहिए. ज़्यादा मिला तो ऑब्वियसली यू नो इट्स इफेक्ट्स. So, levels of desired sound insulation for different types of buildings can be achieved by following construction measures of noise control and sound insulation. So, there are so many different sound insulations are there, materials are available. Even the construction methodology में भी आप include कर सकते हो, साउंड कम कर सकते हो या उसका नॉइस लेवल कम कर सकते हो. Okay, there are different types are there, like wall insulations are there. Wall insulation is vertical barriers, and there are floor and ceiling insulations are there which acts as a horizontal barriers. Then you can provide windows and doors so that you can maintain some noise control. Okay. Then insulating sanitary fittings, yeah, insulation of machinery. See, all these things are different way of controlling the noise. Okay. So general process of controlling noise is multi-stage. So first stage is to reduce the noise at the source itself. Okay, see how there are different stages are there. Okay, so first thing is you reduce the noise at the source. You identify the what is the source of the noise. If possible, you reduce the uh, source only, at the source only. Okay. Second stage is isolating, putting barriers etc between the source and the listener. The second important stage is okay, source को कम नहीं कर सकते या उधर भी कर दिया तो still some more noise is there. Then a source और listener के बीच में you try to make some isolating करो, barriers करो, whether it is a wall construction, जो भी कर सकते हो. The third stage is providing protective measures. तो इसके बाद भी थर्ड स्टेज इज तो लिजनर जो है उनको हियर कोई प्रोटेक्टिव मीन्स कुछ मशीन्स या कुछ का ऑब्जेक्ट्स बना देने का, ठीक है, सो दैट वी कैन reduce the noise levels. Okay, so next is this is a wall insulation. So I don't think so it is not required to go in deep. ठीक है, अगर ज़रूरत है तो मैं दूसरा वीडियो में इसका इन डिटेल मैं फिर से बताता हूँ. There are wall insulations are there, ठीक है. Within that wall insulation में different methods are there. Rigid homogeneous walls, partition walls, double wall partition, cavity wall partition. So this PPT is very self explanatory with proper diagrams है. हर एक methods के लिए एक slide है with one photo है. You can see rigid के लिए you can see your rigid walls के लिए मैंने this is the rigid wall, homogeneous walls है, ठीक है. So similarly partition walls with porous materials, so you can say this is a porous material है, so which acts as a very good insulating material जो act करता है, ठीक है. You can see all these cubes which are can be inserted within the wall cavities के अंदर, ठीक है. Next double wall partition, then cavity wall construction. This is a cavity wall construction है, ठीक है. So because of this cavity, what will happen is whatever the noise is there, it will be absorbed, ठीक है. So travel नहीं करेगा, it will reduce the noise levels, ठीक है. So next is floors and ceiling insulation, horizontal and barriers. So one second, this is horizontal barriers पे बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था. Okay, एक second. Okay, so now requirements and conditions of good acoustics, ठीक है. So now we have to see कि acoustics में it is all about controlling the sounds, providing the controlling the noise, providing proper sounds. कि all this if you're talking about auditorium, it's a huge auditorium, सब लोग बैठे रहते हैं तो हर एक को सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द साउंड मिलना चाहिए. तो ऑल दिस थिंग्स आर कैन बी कंट्रोल्ड और डिज़ाइन के टाइम पे, प्लानिंग के टाइम पे ही कर सकते हैं, ठीक है. इफ़ यू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स देन इट इज़ कॉल्ड गुड अकॉस्टिक्स.
See, initially sound should be of adequate intensity such that it can be heard throughout the hall. Okay? So sound produced should be evenly spread over the entire area. That is what I was trying to tell. Okay, whatever the sound is produced, it has to be spreaded equally. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉर्नर पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, एक कॉर्नर पे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, किसी को बहुत कम सुनाई दे रहा है. इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट. Conference hall, especially if you are talking about the conference hall, proper conditions for listening, assuming that a person may speak or listen from anywhere in the hall. ठीक है. Boundary surfaces should be so designed that there are no formation of echoes. Very important है कि for a good acoustics, the echo should not be generated. Otherwise, if it's echoes generated, then it is very unpleasant. Overlap होता है तो confuse होता है speeches या जो भी act होता रहता है तो it will create a problems. Okay. So, when we are talking about the sound absorption, when sound is generated in an auditorium or a hall, absorbed in 4 ways. Okay. So, whenever the sound is generated, the particular sound will in a particular auditorium will be absorbed in 4 ways. That is, first one is absorption in air, that is friction between the molecules itself will absorb some part of the sound. Second one is absorption by the audience, जो लोग बैठे रहते हैं उनको absorb करता है. The third one is absorption in furniture. So through furniture, whatever the materials are there, that will absorb some part of the sound. And the last one is absorption by the boundary surface. जो भी walls है वो बचा हुआ sound को absorb करता है. ठीक है. So then requirement of the good acoustical materials. So whatever the material you are going to use for the construction purpose, for क्या बोल सकते हैं soundproofing के लिए. So it has some requirements. The first one is it should be high coefficient of absorption. Obviously, if you are using that particular material for soundproofing, it should have that property, absorbing property. Then it should be efficient over a wide range of frequencies. That means ऐसा कुछ नहीं है कि particular frequency of sound को absorb करेगा, बाकी को neglect करेगा. It should not happen like that. It has to absorb all the different wide range of frequencies of sound. Next one is it should be cheap and easily available, obviously. And it should give pleasing appearance. That means, see, you're using that particular material for the walls, all those things you are going to. So obviously auditorium में उसके wall के ऊपर आप लगाने वाले हो तो it should give some pleasing appearance also. ठीक है. It should be fire resistance. Yes, it should have the fire resistance. Otherwise it may cause damage also. Sufficient structural strength. थोड़ा structural strength भी provide करना चाहिए. It should be heat insulating, durable, should not be liable to attack by insects, vermins and termites. So all these things are the some of the requirements if you want to call a material as a good acoustical material. Okay. So next one is acoustic defects, which is very important. See, if you are not designing a proper, if you are not providing a good acoustics for a particular building, so there may be some problems will be there. Yeah, maybe it may cause some defects in the building. So there are different types of defects are there, which is also called as acoustical defects. The first one is formation of echoes. So obviously, if you are not planned properly, या construction या design अच्छा नहीं किया building का, so that particular building के अंदर echoes generate हो सकता है. The second one is reverberation. ठीक है, देखेंगे what is the different, what is reverberation. And then third one is sound foci. Fourth one is dead spots. Fifth one is insufficient loudness. Sixth one is outdoor noise effects. So these are the some of the acoustical defects. Now what we are going to do is एक के बाद एक हम चेक करेंगे और देखेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है. Echoes. First one is echoes. That is acoustical defects. Echoes is produced when the reflected sound wave from the surface of the walls or roof reaches the ear just when the original sound from the same source has been already heard. Okay, technically लिखा है, but you know what is echo. जब आप बातें करते हो एक रूम में, वो साउंड वेव्स पास होके जाएगा, वॉल को टच करेगा, सम पार्ट ऑफ द साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो आपको दूसरी बार वही वेव सुनाई देगा. तो फिर से जाएगा, तीसरी बार फिर से हिट करेगा वॉल को, फिर से वापस आएगा, तो आपको थर्ड टाइम सुनाई देगा. सो दैट मीन्स रिपीटेड टाइम आप जो बोले हो उसी को आप बार बार सुनाई देता है.
एक बार, दो बार, तीन बार, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ वो साउंड वेव्स का स्ट्रेंथ कितना था या अपोजिट वाला मटेरियल कितना अब्जॉर्बिंग था, ताकि मैक्सिमम मटेरियल को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको बहुत देर तक एको सुनाई देता है. ठीक है. Next, formation of echoes normally happens when the time lag between the two voices or sound is about 1 by 17th of a second. So that means that gap we are talking. इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ. Reflecting surfaces are situated at a distance greater than 15 meter. ठीक है. See, defect usually occurs when the shape of the reflected surface is curved. नॉर्मली क्या होता है, ये echoes कब जनरेट होता है कि आपका जो रूम है, हॉल है, इफ़ इट इज़ हैविंग द शेप रिफ्लेक्ट सरफेस कर्व शेप है तो रिफ्लेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, सेलेक्ट प्रॉपर शेप रफ एंड पोरस मटेरियल. ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि आप जब आप बात करते हो वो वेव्स साउंड वेव्स जाएगा, वॉल को हिट करेगा, और मैंने पहले भी बोला था कि कुछ पार्ट ऑफ द साउंड वेव्स वापस आएगा, कुछ खुद मटेरियल ऑब्जर्व करेगा, कुछ वो मटेरियल से पास होके जाएगा या उधर से इट विल यूज एज ए मीडियम. अभी डिपेंडिंग अपॉन दैट मटेरियल, अगर वो मटेरियल ज़्यादा आवाज़ को ऑब्जर्व करता है देन बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ साउंड वापस आएगा, सो एको कम होता है. ठीक है. सो दैट्स वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पोरस मटेरियल रहना चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व करे, शेप प्रॉपर से रख के, फ्लैट से अगर कर्व रखा तो रिफ्लेक्ट होने का चांसेस या एक ही जगह पे आने के चांसेस रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, रिवर्बरेशन. Reverberation is the sound persist even after the source of the sound has stopped. So that means once you told आप आपका बात ख़त्म हो गया बट वो आवाज़ स्टिल रहेगा. See, there is a difference between the echo and the reverberation time. ठीक है. The main difference is echo जब सोर्स आप जब बोले जाते हो तो वो थोड़ी देर के बाद वापस आके आपको सुनाई देता है, बट रिवर्बरेशन वो जो गैप है टाइम वो बहुत कम रहता है और बहुत बार कंटिन्यूसली सुनाई देता है, इसलिए वो सोर्स खत्म होने के बाद भी वो कंटिन्यूसली रहता है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. नेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, हर्ड इवन अप टू 10 seconds एंड द टाइम गैप बिटवीन दैट वन इज यू कांट इवन डिफ्रेंशिएट कि बाबा ये 10 बार बोला है, उतना कम टाइम में वो 10 बार सुनाई देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. ठीक है. द टाइम ड्यूरिंग विच द साउंड परसिस्ट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन टाइम. सो दैट इज़ व्हाट आई विल टाइम. अगर समझो आपने बोला कुछ, समझो आपने बोला कुछ भी बोलो, ठीक है, जैसे कि समझो कॉलेज का नाम बोला मोज़े, तो वो मोज़े 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 दिस इज़ एको होता है. तो देर आर डिफरेंट मोज़े 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 मोज़े, आपको यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट. बट व्हेन इट कम्स टू रिवर्बरेशन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये 10 बार बोला है, बट वेरी गैप बहुत कम रहता है, मुझे ऐसा होता था. तो जितना टाइम तक 5 सेकेंड 8 सेकेंड जब तक वो आवाज़ रहता है, आप मोज़े बोल के चुप हो गए फिर भी वो मोज़े ऐसा रहता है ना, सो दैट इज़ रिवर्बरेशन टाइम. ठीक है. सो it's the period of time in seconds which is required for the sound energy to decay or diminish 60 decimal after the sound source has stopped. So that means whatever the साउंड एनर्जी जनरेट हुआ था वो 60 डेसिमल आने तक जो टाइम लेने वाला है, इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्बरेशन टाइम. द रेमेडी ऑफ दिस डिपेंड्स लाइज इन द सेलेक्टिंग द करेक्ट टाइम ऑफ रिवर्बरेशन नोन एज द ऑप्टिमम. सो ऑब्वियसली देर शुड बी सम ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, क्लियर है, which can be achieved by suitably using the absorbent. Once again, that's why I told absorbent material is very much important. नेक्स्ट वन इज़ साउंड फोकाई. साउंड फोकाई इज़ मैंने पहले भी बोला था कि समझो ये एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उसमें से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए. ओके, दिस इज़ साउंड फोकाई. सो दैट मीन दिस फॉर कैसा है, सिंस इट इज़ कॉन्केव है, ठीक है, तो जो भी आवाज़ इधर से आ रहा है, जो भी साउंड इधर से आ रहा है, तो सब इधर के वापस एक पॉइंट पे आ रहा है, तो मतलब सब एक जगह पे फोकस हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड साउंड फोकाई. साउंड फोकाई मीन्स
इस जगह पे मैक्सिमम साउंड रहेगा, बट इफ़ यू सी दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, इधर कम आवाज़ रहेगा. सो दिस एक स्पॉट्स बन जाता है, फोकस पॉइंट्स बन जाता है कि उस जगह पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, दूसरी जगह पे कम सुनाई दे रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज साउंड फोकाई. दिस इज़ ऑल्सो अकॉस्टिकल डिफेक्ट है. ठीक है. देन देर इज़ वन मोर, नेक्स्ट वन इज़ देर और एक है, आई थिंक इट्स कॉल्ड एज डेड स्पॉट और समथिंग इज दैट. तो वो चेक करता है. ठीक है. सो दैट इज़ डेड स्पॉट बोले तो समझो ये जगह, ठीक है, इधर साउंड ही नहीं है. देर में भी है सम पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज सब आवाज़ जो भी आ रहा था वो सब इस तरफ डायरेक्ट हो गया, बट देर में भी है सम पॉइंट्स वेयर साउंड ही नहीं है, ज़ीरो है, कुछ भी सुनाई नहीं देता. दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज डेड स्पॉट्स. ठीक है. बट देर आर सम स्पेसेस आवाज़ कम सुनाई देता है. सो दीज आर कॉल्ड एज, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स कम आवाज़ सुनाई दे रहा है, एक जगह पे पूरा मैक्सिमम सुनाई दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज साउंड फोकाई. ठीक है. सो हायर इंटीरियर सरफेस कॉन्केव है तो ये क्रिएट होता है. कॉन्सेंट्रेटेड एट सर्टेन पॉइंट्स, अभी एक्सप्लेन किया था. हायर साउंड इंटेंसिटी रिमूव बाय अवॉइडिंग कॉन्केव इंटीरियर्स. सो सब एक ही जगह पे फोकस नहीं होना चाहिए, ऐसे करना है, इसलिए कॉन्केव सरफेसेस नहीं देना है, फ्लैट सरफेसेस देना है. ओके. डेड स्पॉट्स विच आई वॉज टेलिंग, आउटकम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फोकाई, दैट इज़ व्हाट. अगर सब एक ही पॉइंट पे चले गए, फोकाई बन गए, तो जहाँ पे साउंड ही नहीं है उस प्लेसेस, सॉरी उस स्पॉट्स को बोलते हैं डेड स्पॉट्स. डिफिशियंसी इन सर्टन प्लेसेस ओवरकम बाय इंस्टॉलेशन ऑफ सूटेबल डिफ्यूज़र. सो प्रोवाइडिंग प्रॉपर डिफ्यूज़र्स या साउंड डिफ्यूज़र्स या कुछ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये करने के से आप डेड स्पॉट्स को कम कर सकते हो. ठीक है. This defect is caused due to the lack of sound reflecting flat surface near the sound surface, excessive sound absorption removed by providing hard reflecting surface near the sub, और insufficient loudness. तो बहुत ज़्यादा मटेरियल रिफ्लेक्ट हो रहा है या उसके वजह से नियर द सरफेस, तो इसकी वजह से आपको लाउडनेस प्रॉपर से नहीं मिल रहा होगा. तो इसीलिए दिस इज़ वन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज़ जनरल प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स इन अकॉस्टिकल डिज़ाइन. सो दैट मीन्स कोई भी अकॉस्टिकल डिज़ाइन करते समय कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है. जैसे कि पहला वन इज़ साइट सिलेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ डायमेंशंस. नेक्स्ट वन इज़ द शेप ऑफ द बिल्डिंग. देन सीटिंग अरेंजमेंट्स, इंटीरियर सरफेस को कैसे ट्रीट करोगे, देन रिवर्बरेशन एंड साउंड ऑब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें. क्लियर. सो उसी के इसमें आई गिवन समझो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ले आऊँ और अकॉस्टिक्स उसके बारे में बात किया हो. जैसे कि पहला बिल्डिंग एक सिनेमा थिएटर. तो सिनेमा थिएटर में क्या क्या आपको ध्यान पे रखना चाहिए, समझो साइट सिलेक्शन, डायमेंशन, शेप, सीट अरेंजमेंट एंड अदर पॉइंट्स. सो लेट्स सी साइट सिलेक्शन. साइट सिलेक्शन आप पहले ऐसा लो कि आजू बाजू में नॉइज़ कम रहे. सिर्फ वेरी बेसिक है. अगर ऐसा नहीं कि आपको जगह ऐसा नहीं मिल रहा है, आजू बाजू में नॉइज़ है, तो आप यू कैन कंस्ट्रक्ट द सिनेमा थिएटर. बट क्या होता है कि वो आवाज़ कम करने के लिए आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ता है साउंड प्रूफिंग के लिए. अगर आपको ऑलरेडी जगह बहुत ही साइलेंट जगह है तो साउंड प्रूफिंग के लिए कम ये लगता है. सो दैट इज़ अबाउट द साइट सिलेक्शन कि आपको कैसे जगह पहले प्रॉपर प्लान करना है इकोनॉमिक्स के लिए. ठीक है. टू मेक इट द सिनेमा थिएटर मोर इकोनॉमिक. नेक्स्ट वन है dimensions. So if you take the dimension, you can see dimensions are given depends upon the number of audience which are going to accommodate. Then floor area 0.6 to 0.9 meter per second per person देना चाहिए. Height, ventilation, presence of the balcony, type of performance, that depends type of performance के ऊपर. तो थोड़ा ventilation provide करना है. सीलिंग स्लाइट अपवर्ड स्लोप टुवर्ड्स द रेयर साइड, पीछे जाते 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 सीलिंग थोड़ा अपवर्ड जाना चाहिए बिकॉज प्रॉपर साउंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अकॉस्टिकल डिजाइन सिंस इट इज़ गवर्निंग फैक्टर इन करेक्टिंग द डिफेक्ट्स. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. शेप बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ोज, रिवर्बरेशन टाइम, ये सब सेलेक्ट करने या डेड स्पॉट्स ये सब जनरेट हो जाता है, इसलिए शेप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. डाइवर्जिंग साइड्स वॉल हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. अब देखा होगा सिनेमा थिएटर्स में रूम का विड्थ स्टार्टिंग में कम रहता है, पीछे जाते जाते विड्थ बढ़ता जाता है, इट डाइवर्जेस. ठीक है.
so it spreads the sound. ठीक है. नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि फ्रंट रो और पीछे के रो के डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, हर एक सीटिंग अरेंजमेंट का एक पर्सन के लिए बैठने के लिए कितना स्पेस देना चाहिए. ठीक है. और सीट शुड बी स्टैगर्ड. एक ही लेवल पे दिया तो साउंड वेव सबको प्रॉपर मतलब सुनाई नहीं देता है. अगर डिफरेंट लेवल पे रखा तो एवरीवन इज गोइंग टू लिसन. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है. The next one is sound level measurements. See, not required, but there is a photo. All these things are पहले था syllabus में, अभी नहीं है. Okay, this is sound meter which is used to find the level of the sound. I think आपने फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट में जब थे आपने साउंड मीटर देखा होगा, या इवन ने क्लास में भी आपने दिखाया होगा साउंड लेवल मीटर्स. ठीक है. सो वंस अगेन साउंड का यूनिट है डेसिबल. Okay, next I'll continue with some other that is ventilation, lighting, plumbing points बचा है, तो I will continue with that one in the next video. But before closing this particular video lecture, I'll try to show one video. Okay, so in this particular video I'll just trying to जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आई वाज टेलिंग अबाउट द एको एंड आई वाज टेलिंग अबाउट द रिवर्बरेशन. दोनों इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड है. ठीक है. एट अ डिफरेंट टाइमिंग में. बट कन्फ्यूजन, बहुत लोग कन्फ्यूज होता है कि व्हाट इज़ एको कब बोलते हैं और रिवर्बरेशन कब बोलते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो. ठीक है. One more time. Yo! So that's why we'll see that डिफरेंस क्या है. ठीक है. एक सेकेंड. One more time. Making its way back towards you, and finally you will hear a second yo. And this process can keep continuing, giving us multiple echoes. But of course, you may know that as sound travels more distance, it becomes more and more feeble. And so the subsequent echoes that you hear will become more and more feeble, and after 3 or 4 reflections, you can no longer hear it. So, let's look at this effect one more time. Yo! But why doesn't the same thing happen when we are inside an empty room? Why can't the walls of the room reflect sound and make us hear echoes? Well, they do reflect sound, but they are much closer to us compared to the mountains. And as a result, we hear the reflected sound much quicker. And so when the sound undergoes multiple reflections, the time gap between each subsequent reflection that we hear is very small. And as a result, our brains cannot tell when one sound ended and when the next reflected sound began. Now, to understand this better, we can actually go ahead and do a demo. So in this editing software, I have copied the original yo sound and pasted it multiple times to simulate the echoes. Now when we play this, we'll first hear this sound, the original one, then the first reflection, then the second reflection, and the third and fourth. And the gap that I've kept now in this case between each sound is about 0.8 seconds. So let's play and see what we hear. Here goes. Yo! 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 This was very similar to the mountain case. I'm pretty sure you could clearly distinguish between the different reflected sounds. So we'll call this as echoes. And so as we saw, 0.8 seconds is big enough for our brains to differentiate between the different reflected sounds. So let's reduce that gap and see what happens. Now I've made that gap 0.4 seconds. Let's see if we can hear the echoes. Here goes. Yo! Again, I'm pretty sure
you could still hear the individual sounds, the individual reflected sounds. Let's play it one more time. Yo! So we will still call these as echoes. Even 0.4 seconds is big enough for our brains to differentiate the sounds. Now we will make the time gap very small. Alright, now the time gap is about 0.07 seconds. So let's zoom in a little bit. This time gap now is 0.07 seconds. Let's see if we can hear the individual echoes. Here goes. Yo! Could you hear it? Let's play it one more time. Close your eyes and see if you can actually hear the individual echoes. Here goes. Yo! I don't know about you, but I couldn't tell the distinct echoes anymore. I couldn't tell when one sound ended and when the next one began. And it's for this reason we won't call these as echoes anymore. So let's hear it one more time. Yo! So these successive reflections are only prolonging that original sound in our head. And this prolongation of the sound, or persistence of the sound in our ears due to these successive reflections, is what we call reverberation. And in some specially constructed buildings like the Gokumbas of Bijapur or in some caves, the reflections can be very strong. And instead of hearing just 4 reflections, here we can easily hear 50 to 60 reflections, giving us an extremely strong reverberation. So let's simulate what that would sound like. So here's what reverberation sounds like with about 50 to 60 reflections. Ready for this? Here goes. Yo! It's still there. It's still there. Alright, so if the time gap between successive reflections is a lot, we'll call them as echoes, and if it's very small, we'll call them as reverberation. But one question we might have is how much time gap is needed for echoes and for reverberation. Okay, ठीक है. So that is about the echo and reverberation. I hope you understood the difference between the echo and the reverberation, sound insulation techniques, acoustic defects, then about the sound absorbance, then planning for good acoustics. ठीक है. So in the next video I will cover the ventilation and lighting, plumbing and other services. ठीक है. चलो. Thank you. Bye.